हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुल राजपूत एंड you're watching my channel. मैं फिर हाजिर हूँ with the second part of tea bread butter jam. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते. आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर. मैं आपकी दुआ से आई एम डूइंग सुपर फैंटास्टिक. वेरी डिलीशियस banana jam. This is the Nendran Pallam. This is half kg. I'm going to blend this. Okay. Meanwhile, let's make the sugar solution. For that, I've taken sugar. Take 1 cup. I've taken little less than 1 cup. Little less than 3/4 cup. This is. I'll give you complete measurement for half kg. So do check the description box. Till then, I'll blend the bananas. So friends, this is my Lee Star blender. I've already done the unboxing for this. I've given you a review also for this. I will leave the link to check that out. The sugar has melted. I'm going to add lemon juice. This is my frozen lemon cube. 1 tablespoon. So total 2 tablespoons I've added. We will continue mixing this till the banana pulp reduces. So coming to today's content, I'm going to share with you amazing chai masala. Sorry, I mean golden chai masala. That's a very old recipe of mine. I'm using it from last 30 years. ऐसा चाय मसाला आपने शायद ही देखा होगा. It's very different. And I make very small batch of masala. This will take at least 10 minutes to reduce. So keep your patience. Okay. So if you like me, if you're very fond of jam, I really make only homemade jam. I don't try outside jams. Do check my orange jam and my strawberry jam. Very delicious. Strawberry is not in season. Soon it will be in season. And friends, do try to consume fruits that are in season. Don't go for mango in this season. Don't go for green curry in this season. Because they are all seasonal. Seasonal fruits का मजा उसके season में है. और health भी उसमें ही है. Friends, do remember to give your like on this video. And if you have not yet subscribed, then do remember to subscribe my channel. Thank you. And to all my new and old subscribers, thank you so much for subscribing my channel. Thank you so much for giving your support. But जो भी वीडियोस डालती हूँ बड़े दिल से डालती हूँ मैं. हर बार मैं कहती हूँ अगर आप एक एक्सपर्ट कुक हैं तो मेरे चैनल से आइडिया लेके जाए और मेरे रेसिपीज को और भी बेहतर बनाए. तो मैं इसे और अच्छे से फर्दर रिड्यूस करके आपको मिलती हूँ. Friends, it took 10 minutes to reach this stage. Alright friends. How to know that your jam is ready, especially in case of banana. If you see carefully, now you can see one shine on top. और उसको 10 मिनट अच्छा भुनने के बाद, okay, you come to know. See, there is a shine. See now, not because of the tube light, but you can compare this video and the beginning how it was. Beginning it was looking like matte finish. Now you can see a nice shine on it. So this is the sign that this is done. Little vanilla essence. Just half teaspoon. So banana has one typical smell, you know. So that smell will go. Lemon juice will help it to preserve. And plus lemon juice will control the crystallization of the sugar. यानी जब आप इसको फ्रिज में रखोगे तो शुगर के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे. ठीक है. And plus it enhances the taste also. So this is ready and we'll allow this to cool and then I'll fill this up in sterilized bottles. Let's come to the tea. I'm going to show you 4 types of tea today. The first tea is going to be of this. This is a 30-year-old recipe. From past 30 years, I'm making my tea like this. Very simple. We all have our way of making masala chai powder. Try this out. You are going to love it.
So for this masala chai, okay, we have here 2 tablespoon whole pepper, 2 tablespoon cardamom, 2 big cardamoms. Then here is 2 tablespoon ginger powder, या सौंठ का पाउडर बोलते हैं, ginger powder. Here is this magic. This is almost 1/4 teaspoon turmeric powder. Okay, we got here half tablespoon cinnamon powder. We got here 2 tablespoon mint powder. Got here 1 tablespoon coriander whole. Got here half tablespoon cloves. This is the quantity of cloves you should take, otherwise your tea can become very sharp. So be careful with your cloves. So you know all these elements, they have got amazing benefits. Okay, now let's blend them. I have checked lot of tea masalas. Haven't come across anyone using turmeric powder in it. That's why I call this as my golden chai masala. Here this is blended and ready. If you have liked anything so far, do remember to give your like, share and subscribe. Friends, इतना मजेदार chai masala powder बन गया है. So I'm going to allow this to cool down and then we'll fill it up in bottles. Meanwhile friends, the jam has cooled and I have filled them up in a small steel dabba and a bottle. I really enjoyed making this jam and it tasted heavenly. You must try this out. Alright friends, let's quickly get to other tea. We are going to make Kashmiri kawah. So I'm not doing much. I'm going to just use this in the water. An amazing Kashmiri kawah will be ready. Then we are going to make turmeric tea. This is from my garden. So I'm just going to use half of this. And this turmeric tea is to die for. Too delicious. And we'll make and for this I'll also add little ginger. And when I'm making the masala tea, I'll be adding this. Cocoa, chocolate tea. Yes, we'll make that also. So stay on the video till the end because ahead I'm showing you a fantastic coffee shop. Okay, tucked in the heart of Koramangala, opposite BSNL. Shown that coffee shop in the part 1. If you haven't seen, then do watch it. So I'm sure what I'm showing you ahead, you'll be enjoying it a lot. Okay, so let's get quickly started with this tea. तो चले फ्रेंड्स, बनाते हैं मज़ेदार चाय. रहा ये कश्मीरी कावा, देखिए इसकी क्वालिटी, ओहो हो, और खुशबू तो बेहतरीन. ये डाला है मैंने 1 tablespoon. All right friend, my apologies. From here I'll be doing a voiceover because on the phone on which I had recorded this, that phone speaker is spoiled. I added 1 tablespoon that Kashmiri kawah and that was ready. Friends, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मसाला चाय. तो मैंने लिया है हाफ कप पानी, उसमें डाला है थोड़ा सा अदरक, हाफ टी स्पून अदरक, हाफ टी स्पून चाय मसाला एंड 1 1/4 टीस्पून चाय पत्ती. अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने चाय में तो आप ऐसा करें. उसे रख दिया है पकने एंड हियर आई हैव रिमूव्ड द कश्मीरी कावा इन द कप. वाओ, दिस वाज सुपर डिलीशियस. अब फटाफट से मैंने सारी चाय बनानी है. ओके, एंड लुक एट दैट, नाइस एंड गोल्डन. एंड हियर चाय उबल रही है. तो आप कैसे अपनी चाय बनाते हैं? आपको किसी को कड़क लगती है, किसी को लाइट लगती है, उस हिसाब से इसको उबाल दें. मुझे थोड़ी लाइट लगती है. एंड आई एडेड टू दैट हाफ कप मिल्क. और चाय दूध डालने के बाद कम से कम 5 मिनट उसको अच्छा उबाल दें. आई हैव शिफ्टेड दैट टू अनदर गैस. आई गॉट माई अनदर स्मॉल पैन इन. तो इसमें मैंने हाफ कप पानी डाला है, थोड़ा सा अदरक शामिल किया है. वी आर मेकिंग चॉकलेट टी. और मैंने लिया यहाँ पे हाफ टी स्पून कोको, बाद में मैंने 1 टीस्पून कर दिया था, एंड 1/4 टीस्पून चाय मसाला. और फिर मैंने शामिल की चाय पत्ती विच इज़ 1/4 टीस्पून. और बस इसे बहुत अच्छे से उबाल देना है, बहुत अच्छे से उबाल देना है, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स. ऑलराइट,
देखिए फिर आ गई हाफ टी स्पून कोको पाउडर. Give it a good stir, okay, and after that I kept this aside on another gas so that it boils for at least 5 minutes. और लो आ गई सामने हमारी मसाला चाय which is almost done. तो चलो भाई मसाला चाय को pour out करते हैं. हा, जिसे चाय पसंद नहीं है ना उसे भी चाय का चस्का लग जाएगा. इतनी बेहतरीन मेरी चाय बनती है. ऑल द टी रेसिपीज़ आर ट्राइड एंड टेस्टेड. तो आप आंख बंद करके बना सकते हैं और सारे मेजरमेंट्स भी परफेक्ट हैं. सो बिना झिझक के बनाएं. और देखिए इस चाय का रंग क्या मज़ेदार लग रहा है. और अब दोबारा से हाफ कप पानी मैंने उबालने रख दिया है. I've added अदरक, I've added the crushed fresh turmeric. I also added to this the turmeric leaves, stem, everything. We are making the delicious turmeric tea. और क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है विंटर, तो ये सारी चाय मैं आपको विंटर के लिए दे रही हूँ. तो आप अपना विंटर बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करें विद वैरायटी ऑफ टी. और क्या चाहिए. तो चाय पत्ती भी मैंने उतनी डाली है 1 टीस्पून 1/4. और सभी चाय में मैंने शक्कर डाली है 1.5 टीस्पून. और चॉकलेट टी में मैंने डाली 2 टीस्पून. तो टर्मरिक टी रख दी मैंने वहाँ उबालने के लिए. और चॉकलेट टी में मैंने डाला है हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा दूध, क्योंकि चॉकलेट टी है ना. और देखिए मैंने शामिल किया है इसमें 2 चम्मच शक्कर. सभी चायों में शक्कर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, कम या ज़्यादा. मैंने तो अपने हिसाब से डाला है शक्कर. गिव इट अ वेरी गुड स्टर. चले भाई इसे भी निकालने का टाइम आ गया है. सो लेट्स क्विकली पोर दिस डिलीशियस चॉकलेट टी इनटू द कप्स. काश मैं आप लोगों को वो चाय गिरने का जो साउंड होता है ना, मैं वो आपको सुना सकती थी. और अनफॉर्चुनेटली मुझे यही सेक्शन के ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ा. सॉरी अबाउट दैट. आई होप यू एंजॉयड माई टी रेसिपीज़. दिस इज़ एन एक्सेलेंट विंटर स्पेशल. और ये दिवाली अपने मेहमानों को खुश कर दो. सरप्राइज योर गेस्ट दिस दिवाली विद चॉकलेट टी एंड द टर्मरिक टी. They are going to love it. And finally our turmeric tea also is done. Again half cup milk I've added, and I added 1.5 teaspoon sugar, and this also is done and ready to pour. इन सब चायों का आपको स्वाद एकदम यूनिक आएगा. और ये सभी चाय हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है. तो ज़रूर इन चायों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें बिना झिझक. होप अंटिल नाउ यू हैव एंजॉयड द वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक. आ जाते हैं हमारे अगारो टोस्टर. तो ये देखिए मैं ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ. और नंबर 2 पे मैंने टोस्ट किया है तो वो इतना लाइट है. नंबर 3 पे डार्क है. सो द कंप्लीट वैरायटी टी स्प्रेड इज़ रेडी विद द टोस्ट विथ होममेड चीज़, होममेड जैम. खाली बटर मेरा होममेड नहीं है. पर अगर आप होममेड बटर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो I'll give the link on the screen. Do check it out. I hope you really enjoyed today's video. I was planning this for a very long time. और ये देखिए बटर लगा दिया, बनाना जैम लगा दिया और इतना मज़ेदार था. वेरी फ्लेवरसम. फ्रेंड्स ये सब बनाना बहुत आसान है. जो मुश्किल होती है ना वो हमारे दिमाग में होती है. तो मुश्किल को आपके दिमाग से निकालें and do make this. Friends, everything is easy in life. Nothing is difficult. Difficulty is in the head. Remove that difficulty word and do make my recipes. So if you have liked anything today on this video and the previous video, don't forget to give your like, share, subscribe. Take very good care of yourself. Be safe. Keep smiling. Good food, good mood. And until we meet next, don't forget to eat, love and pray. Bye. फ्रेंड्स बहुत दिल से बनाया है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों बनता है. रिक्वेस्ट करती हूँ टू ऑल ऑफ यू, गिव योर सपोर्ट टू माय चैनल,
so that it grows. Friends, chai pe aa jao.